Assalamu alaikum. So, welcome to this session. So, let's begin the session. So, first of all, I will be a candidate and Dr. Usman will be an examiner. Dr. Usman, Okay, and evening, Dr. Shafkat. good evening. I will be asking you a scenario. You have a 65-year-old female presented with lower abdominal pain, more on left iliac fossa, with on and off history of bleeding per rectum, for which she has been consulting some local doctor. Now, presently, she has presented with uh, gas passing out of his of her during urination. She has a also she has a recurrent urinary tract infection. What is your approach towards this patient? How would you diagnose and how would you approach this patient? So, first of all, I will take the history and then perform the physical examination. I am suspecting in this patient colovesical fistula. It could be because of carcinoma of the colon, or it could be because of the diverticulitis. So, keeping in these diagnoses in mind, I will take the detailed history and I'll ask for the symptoms, the duration of the symptoms, any comorbids, for the result of the previous investigations, any Okay, treatment. how would you investigate? How would you investigate this case? So, in this patient, so this patient has a fistula formation. So I will get the colonoscopy. I will arrange the colonoscopy for this patient and the cystoscopy as well. So I will involve the gastroenterologist and the urologist in order to diagnose. And before that, I would like to have a contrast and CT scan of the abdomen and pelvis. Okay, CT scan reveals uh, Hinche class 2 uh, diverticulitis. What would be your management plan then? So is there any that means there is a flexion. So right now the patient is in what is the current status? As she is in pain and is there any fever No, she associated has a on and off fever. She has lower abdominal pain, and but she is vitally stable. widely same? And is there any localized tenderness, generalized tenderness? She has localized tenderness in lower abdomen, more on Lower left abdomen. side. So on the left side. So I will discuss with the radiologist, see what is the size of the collection, and I start off with the antibiotics in the patient and start with the analgesics. I admit the patient, and if the abscess is large, so I would request the radiologist support in the take the sample for the culture sensitivity and put in the percutaneous drain. Okay, after putting in the percutaneous drain, symptoms does not improve, but she continued to deteriorate. And after some time, she develops into sepsis. She went into sepsis, and her symptoms, urinary tract symptoms, continues to increase. Okay, so if the patient has not improving and developing the sign of sepsis, so that is an indication for the exploration. So in this patient, so I would first of all I counsel the patient about the procedure and its risk and the benefits. I will involve the urologist in this patient, and Okay, how would before you that, operate? What operation would you like to do in this case? so it will be a combined venture with the urologist because in this patient we will requiring the ureteric stent as well. So it will be first of all defining the fistula and separating it, dissecting it out, and doing the sigmoid depending upon the what is the status of the peritoneal contamination. The sigmoid resection along with the bladder repair with the momentum will be placed in between the. Okay, what resection would you like to do in the sigmoid colon? So it was sigmoid resection colectomy. So sigmoid Okay, colectomy, and okay. Would you like to do primary anastomosis? so yeah, it depends upon the condition status of the. Because initially it was a localized collection. So if there's no generalized peritoneal contamination, patient fine. So um, it will be followed by the primary anastomosis and putting the momentum in between both the repairs. How would you follow up this case in post-operatively?
So What is postoperatively, yes? postoperatively, I will follow the patient during immediate post-op periods. I will initially keep the NPO with antibiotics, analgesics, and watch for the development of any complications. So once the patient has um, get out of the procedure, and I would review the histopath report, and then I would proceed further to see whether there any sign of malignancy as well. How would you rule out malignancy in this case? So I would review this histopath report of the specimen which we have Oh, resected. okay. Histopathology report is negative for malignancy, but she has raised serum CEA levels. What would you do? CEA level is raised, but there is no evidence of any malignancy. On your resected segment, there was no malignancy. Okay. So there was no malignancy, but so I would like to review his CT scan again, the previous CT scan which has already been done, and to see whether there are any other lesions, and we'll discuss with the radiologist as well. So now, afterward, if there's nothing, then when the patient has improved, so I would go for the complete. I would ask the gastroenterologist for the colonoscopy. So, is there any Okay, okay. synchronous What is metachronous lesion and what is synchronous lesion? synchronous lesion with the lesions, the malignant lesions which are picked up at the same time, and the metachronous lesions ones who have resected the lesion, and after some time the patient develop a malignant lesion. So in this patient, so I would like to see whether the patient didn't undergo the colonoscopy. Keeping in mind the raised CEA level, so I would request the gastroenterologist to do the colonoscopy once the anastomosis has healed after at least Okay, 6 weeks. okay. Thank you very much. Thank you. जी, इसमें कोई बताएं कि इम्प्रूवमेंट के लिए क्या कहाँ पे गलती बोलने में या बाकी जो ना Sanuman? यार एक तो जब कंटेमिनेशन है तो फिर आप प्राइमरी एनास्मोसिस का जिक्र मेरा ख्याल में ना करें जब हाँ, मेरा भी कंटेमिनेशन ये इतनी ख्याल है ज्यादा सर। है। तो मेरा ये ख्याल है उसमें कि आप उसमें बता हार्टमैन देना कि कंटेमिनेशन है तो उसमें तो कोई अब दूसरी बात ही नहीं रही। हाँ नहीं कंटेमिनेशन असल में वो एग्जामिनर से मैंने कहा था डिपेंडिंग ऑन द कंटेमिनेशन। अब वो आगे मुझे मतलब मिला नहीं है कि वो क्या तो उसने उसने बताया नहीं है कि एब्सेस पड़ी हुई है और उसने एस्पिरेट भी की है और हम्म, वो तो बताया था ना उसने तुझे। हाँ वो बताया था थोड़ा मैं कलेक्शन है थोड़ा सा मैंने बताया था कि आपने जो है अल्ट्रासाउंड गाइडेड एस्पिरेशन कराई है लेकिन इम्प्रूव नहीं हुआ, डिटरेट हो गया है। डिटोरेट कर गया हाँ हाँ। बिल्कुल। अब एंड फिर जो है ना, और पेशेंट जो है ना सेप्सिस में चला गया है, हम्म, और जो है ना थिंग्स आर गेटिंग वर्स। हम्म, हाँ तो उसमें ठीक है तो जब इस तरह क्लू मुझे लेना चाहिए था कि यार जनरलाइज पेटनाइटिस की बात करनी है ना। हम्म। ठीक है तो मेरा फिर अपना जाती ख्याल ये है कि जो है ना हार्टमैन वुड हैव बीन ए बेटर डिसीजन एज कम्पेयर टू प्राइम, क्योंकि the colic anastomosis, they are more liable to get leaked वो तो if you go. एग्जैक्टली उसी में जिस स्टेज And secondly, if you want to do primary anastomosis, then always talk of proximal covering ileostomy. If you are trying to do primary anastomosis in colon, colic anastomosis, if you are doing especially on left side, so it is always better to do covering ileostomy along with anastomosis. वो अगर आप दो एनास्टोमोसिस हो तो उसमें है लियाओस्मी का लेकिन इस वाले सिनेरियो में है कि अगर टॉकिंग अबाउट कंटामिनेशन मुझे और इसको क्लियर कर लेना चाहिए था मैं थॉट ठीक है यू गिव सिनेरियो कि इसके पेशेंट डिटोरेट सर किया आवाज कम आ रही है आपकी, आवाज जी कम आ रही है करीब से। आपने आपने जो सिनेरियो मुझे दिया था ना कि पेशेंट डिटोरेट कर गया तो मुझे उससे क्लिक करना चाहिए नहीं यार इसमें नहीं है तो पर आप फिर पूछा था कि क्या सूरतें हैं ना तो या आप इसको क्लियर करता हूँ नो सिग्निफिकेंट कंटामिनेशन नहीं है तो फिर तो ठीक है ना अदरवाइज इसके अंदर हार्टमैन प्रोसीजर आप उसको क्लास नहीं करते। Otherwise, it was a well defended case, well managed, good approach towards the patient. अच्छा And उसमें you, बेसिकली जो एनालिसिस है ना बेसिकली
जो फीडबैक है, फीडबैक Yes. मतलब कहाँ पे जो जैसे अभी आपने एक पॉइंट आउट मुझे किया कि यहाँ पे यस ये आपने पेशेंट के जो मैंने कहा था डिटेरेट करा तो आपको मुझे क्लास्पिंग का करना चाहिए, ठीक है। इस तरह और कोई स्टार्टिंग विद हिस्ट्री देन अच्छा, और one my suggestion is that whenever we talk of old patients above 50 years age with bleeding per rectum, we almost always must have high index of suspicion regarding cancers. ठीक है, We should always do tumor markers. ठीक It है, is my humble submission that because there are many times and she might have diverticulitis along with some occult cancer. बट को एग्जिस्टेंट भी हो सकता है, यस। को एग्जिस्टेंट कैंसर हो सकते हैं, और जो है ना एज एंड colonoscopy is always advisable in this patient. Whole colon has to be seen by the gastroenterologist to pick, because large colon is notorious for metacranous and synchronous lesion. There is one lesion in one place and second lesion on the other place. Till the time you get whole the colonoscopy, उस तक जो है ना चीजें क्लियर नहीं होती. एंड ट्यूमर मार्कर्स एट द सेम टाइम है पड़ी हुई है, जी डिफरेंस ये है कि एक भी पड़ी हुई है लेकिन आफ्टर सम टाइम जी दोबारा किसी और जगह पे वो बन गई। हाँ जी, पहले निकाल दी आपने और दोबारा बन गई कहीं पे. हाँ, अब ये मेरे तो सिम्टम्स को आप मिस भी कर सकते हैं, मतलब आपने एट सेम टाइम पड़ी हुई है, दो तीन लेंस पड़ी हुई है, लेकिन जी आपने एक को देखा दूसरी को देखा नहीं, तो हम कहेंगे उसको सिंक्रोनस ही कहेंगे। मेटाक्रोनस होता है जी ना, ऐसे ही है. अगर टाइमलाइन पे भी है कि आपके हम्म आपने कोलोनोस्कोपी किया कुछ भी नहीं है, लेकिन आफ्टर हम्म 2 ईयर का टाइम है, 2 ईयर टाइम है हाँ जी जिसको सर, आवाज मेटाक्रोनस। आवाज करीब से बोले सर, आवाज आपकी. मैं कह रहा हूँ जो मेटाक्रोनस का जो टाइमलाइन है ना, मेरे ख्याल में वो 2 ईयर टू का है। ईयर्स हाँ, 2 ईयर, 2 ईयर्स. 2 ईयर का। हम्म ठीक सर, है। एंटी एनी सजेशन फ्रॉम योर साइड? नहीं बस ठीक है, बाकी कवर हो गया। हम्म, चले सर, एक अभी आप सवाल करें, मैं अब जवाब देता हूँ. जब तक सर आमिर तो भी लेट ही लग रहे हैं. अच्छा ठीक है, मैं पूछूं फिर। जी सर. अच्छा, a 25 years old male who was a bike rider has sustained road traffic accident and is brought to the emergency department. He sustained accident about 40 minutes back, and he is brought in unconscious state, and he's bleeding from his there is some bleeding from his right chest, external bleed. So how will you manage this case? Okay, first of all, I will receive the patient in ER, and according to ATL's protocol, I will first of all resuscitate the patient. I will activate my emergency response system. All of the emergency response team I will activate, and because patient is unconscious, he has might have compromised airway according to ATLS protocol. I will first of all assess his airway. I would like to talk to him. If he responds to my command and he is conscious oriented, then it means that his airway is intact. Otherwise, I will first of all do the chin lift and throw. He responds to verbal commands. He responds to verbal commands. He Airways, responds. airways, you Uh, find okay. I will attach a pulse oximeter, see what is the saturation. I will assess, I will see, palpate his trachea, I will palpate his neck, and I will auscultate both side of his chest to see whether there is bilateral air entry or not. I will palpate the chest cage to see any rib fractures, and I will percuss to see. There was a wound on the right chest which was bleeding I out. would like to know the size of the wound, and was it an open wound or was it a 2 by 3 centimeter open wound. oh, and it is bleeding? Yes, it is bleeding and there is sound of air coming out from it. Okay, as a emergency wire, I will apply three-way valve, three-sided occluding dressing and arrange for chest tube because it is an open valve, open pneumothorax with sucking chest wound. And I will also ask my one of colleagues to pass a large IV cannulas and attach fluids.
I will arrange. I will do needle thoracostomy. Sorry, I will arrange chest tube and put a chest tube inside the chest uh, and then I will close the wound on the chest. Then I will perform a fast scan to see the any intra-abdominal bleed. I will see the response to resuscitation. I will continually Okay, uh, assess his okay, that's uh, great. oxygen saturation. I will take blood and send for grouping and cross matching. Fast scan is normal. The fast scan is normal. What next? Okay, fast scan is normal. Then I would also assess his GCS because you have said that initially he was His GC, uh, his GCS is 11 by 15. okay. Then I will also consult neurosurgeon and I will continue to resuscitate it and see what is the response of resuscitation. If fast scan is normal, I will reassess his chest. I will see whether with the insertion of chest tube, his saturation has improved or not. And I will, uh, The BP at present is 80 by 50 and his pulse is 120 beats per minute. okay, I will pass Foley's catheter, Foley's catheter and fast scan. I will repeat the fast to see whether it's intra-abdominal bleed, and I will also see whether there is any bleed in the chest tube or not, because patient is might be bleeding from chest or abdomen, or he can have bleeding from limbs. I will also want to know the status of the his long bones. Uh, if fast Okay, is normal. so fast scan shows some fluid in the pelvis and the chest tube is okay. There is no blood in it, but the fast scan shows some blood in the some fluid in the pelvis. Okay, This is I will investigated. What should you do next? during my registration in the trauma center, I will also request for a chest X-ray in the emergency chest X-ray and X-ray pelvis to see whether there is any open book fracture or not. And I There is, will do there is digital rectal examination. Yes. on X-ray pelvis there is vertical shear fracture of the pelvis, pelvic ring. Okay, then I will contact my orthopedic colleague and try to stabilize the pelvis and continue resuscitation and see what is the response. If it is How not, will you then I will, stabilize the pelvis? yes, How will you stabilize the pelvis? pelvis by first of all applying the binder, and then I will do the extra, call orthopedic surgeon to apply external fix in order to of the pelvis, and I will activate my OR team for exploratory laparotomy if patient is not stable. And I will, if the facility of angiography is available, I, Other option than any other option than opening up the patient right away. sir, we can do pre-peritoneal packing instead of opening to stop the bleeding from the pelvis. Instead Because of opening the patient, is there any other option instead of taking him to OT and yes, if patient condition allows, then we can do angioembolization. If facility of angioembolization is present, then we can do angioembolization of the pelvic vessels. okay, by applying the pelvic binder and giving IV fluids, his BP is stable and his pulse is also stabilized. Now what will you do? Then I will do the again. Now I will do secondary survey to see the extent of the other injuries. If patient is stable, then I will go for contrast and then CT scan to see the solid organ and solid organ injury, whether spleen is normal, liver is normal. I will like to see the status of the both kidneys. Simultaneously, I will do CT IVU and see the response. What is the grade of the injury? If I will also like to do know whether there is signs of peritonism or not, any bowel injury, because patient can have occult bowel injury as well. Abdomen, the city abdomen is clear. The city abdomen, apart from showing a small amount of fluid in pelvis, it is clear. There is no solid organ injury, No solid organ injury. and patient is stable after resuscitation. Patient is vitally stable, but his GCS is still 11. I will like to do the CT scan of his brain
to see whether there is a intracerebral bleed or some extradural hematoma. Brain shows a large left extradural hematoma. Okay, I will then consult a neurosurgeon for the consultation, and I will admit this patient to. Neurosurgeon is sitting 2 hours away from you. What will you do? I will continue to monitor his GCS. If I will inform anesthetist, experienced anesthetist to continuously be present there. If there his GCS drops beyond 8, then I will intubate the patient and put him on the ventilator and arrange What transfer. else? Arrange What transfer for the arrange transfer for the patient to the neurosurgical unit once patient is stable from abdomen side, or I will call the neurosurgeon to. So, can you do any measures before transferring him to neurosurgeon? I will try to lower his intracranial pressure. I will give him one shot of mannitol, and I will give him high flow oxygen. I will stabilize his cervical spine, and I will continually keep an eye on his vital signs, whether there is any bleeding or not, because primary resuscitation is important in the case of head injury. ठीक है, thank you. भाई अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम जी सर. आमिर भाई भी आ गए हैं ना. जी सर. फीडबैक सर इस पे. फीडबैक इसमें तो ठीक है. तो तू ब्रेन को भूल गया था बीच में ना. मतलब ब्रेन को आपने जब बाकी स्टेबलाइज कर लिया, फिर आपने ब्रेन पे वापस चले जाना है. आपने फॉरन अपने सर्कुलेशन और वो स्टेबलाइज हो गया. ठीक है. और दूसरा यही कि आपने जब ट्रांसफर करना तो उससे पहले मैनिटॉल, तो आप इतना बड़ा हीमोटोमा है तो जरूर उसको दे दें और उसको प्रॉप अप कर दें. और बाकी तूने बताया ऑक्सीजन दे दें. ठीक है, बिल्कुल. एंटी कन्वल्सेंट्स भी हम स्टार्ट कर देते हैं. और बाकी क्या हम देते हैं ये अपना बस. हाँ, यही चीज़ें हैं जो आपने ट्रांसफर से पहले मतलब जो आप कर सकते हैं. और इसके अलावा आपने क्या बताया था पेल्विस में? हाँ, वही चेस्ट का जो वुंड है वो मैंने आपको याद दिलाया. तो आपको वो जब पहली बार बताया ना, फिर चेस्ट के वुंड का जरूर तू उसको मतलब जिक्र कर दे कि ठीक है. आपने वो चेस्ट का वुंड का था तो उसकी क्या वो है. सही है. और बाकी अच्छा ठीक है बाकी सारा तो. और ये हाँ, पेल्विक बाइंडर का भी तूने, मैंने जब कहा तो फिर तूने जिक्र किया. पहले ही बोल दे पेल्विक बाइंडर. मैंने कहा ना कि वो ठीक है. पेल्विस में जब फ्रैक्चर आ गया वर्टिकल शियर, तो उसमें आप बाइंडर फाइंडर लगा दें. अच्छा, ये वर्टिकल शियर में भी बाइंडर लगाते हैं या ये ओपन बुक में लगाते हैं? मेरा तो ख्याल में दोनों में लगाते हैं, सिर्फ उसमें नहीं लगाते वो जो लेटरल कंप्रेशन है. बेहतर बताएगा. वर्टिकल शेयर और जो ओपन बुक फ्रैक्चर है, ये हैं जो अनस्टेबल फ्रैक्चर है. और जिसका पेशेंट जो ना पेशेंट कैन डोज 2-3 लीटर जो है ना इवन ब्लड जो है डोज कर सकते हैं. और इसमें एक तो बाइंडर के अलावा आपको ट्रैक्शन भी देते हैं. दूसरी नेक के साथ उसको टाई कर देते हैं. तो उसे आवाज कम आ रही है सर. आपकी आवाज कम आ रही है सर. यार ये पता नहीं आवाज को फिर क्या दोबारा हुआ इशू. मैं ये कह रहा हूँ इसके अंदर वर्टिकल शियर है तो इसके ट्रैक्शन का भी रोल है. ट्रैक्शन भी लगाते हैं. स्केलेटल ट्रैक्शन ये लिम्स पे. स्किन ट्रैक्शन जो ना, स्किन ट्रैक्शन नीचे ही है ना. तो स्किन ठीक. ट्रैक्शन और साथ उसके बाइंडर के साथ. तो बाइंडर तो मस्ट है दोनों में ना, ओपन बुक और वर्टिकल शेयर में. बाकी है कि तुम ठीक बड़ा है. सिस्टमेटिकली गए हो, स्टार्टिंग विद द प्राइमरी सर्वे ए बी सी सीक्वेंस वाइज है ना, एंड डी. लेकिन जो थोड़ा सा उसमें आया ना जब पेल्विस पे हम आए हैं, तो पेल्विस पे आके तो रादर देन गोइंग फॉर द लेप्रोटमी कि उसके जाए अलग वो मिनिमल उन्होंने फ्री फ्लूइड दिया हुआ था ना, हाँ, वो या लेप्रोटमी पे फौरन चला गया. एंजियोएम्बोलाइजेशन. हाँ, लेप्रोटमी पे ये फौरन चला गया था. हाँ. तो आप कहेंगे जी आपने एक अच्छा किया कि कॉल दी ऑर्थोपेडिक सर्जन, उनको इन्वॉल्व अपने कर लिया, बाइंडर अपने अप्लाई कर दी है, ठीक है ना. तो फिर उसके बाद जो है ना उसका सडनली वो नहीं. हाँ, अगर वो कहते हैं जी ये पेशेंट डिटोरेट कर रहा है, हाइपोटेंशन में है, तो फिर आप देखते हैं कि जी फिर रिपीट आपने अच्छा किया, रिपीट भी करा ली फास्ट किया, फिर उसका मिनिमल सही है, तो इसका मतलब वो डोमेन के अंदर नहीं है, ब्लीड कर रहा है. फिर आपने उसको देखना है ये फ्रैक्चर के अंदर ब्लीड कर रहा है, फिर आपने ऑर्थोपेडिक सर्जन को इन्वॉल्व कर लिया. फिर आपने उसकी पैकिंग की तरफ जाना है कि नहीं जाना. ये एक्सपिक्स लगाना है वो ऑर्थोपेडिक सर्जन की उनका डिसीजन है, ये उनका डिसीजन होगा. और एक्सपिक्स लगाएंगे, पैकिंग करनी है, ठीक है.
और फिर अच्छा सर, ये उसके प्री बाद पेरिटोनियल पैकिंग जो है ये कैसे करते हैं? ये इसका आप एब्डोमेन खोल खोल के आप रेक्टस शीथ अलग करके रेक्टस मसल के पीछे जाके पैक डालते हैं, पेरिटोनियम तो नहीं खोलते ना इसमें? इसमें इसमें प्री बेसिकली पेरिटोनियल का मतलब यही है कि पेरिटोनियम को नहीं खोलना। उसमें ये मैं ये तो मैं शेयर भी कर दूंगा बेशक ना। ये जो पेल्विक फ्रैक्चर के ऊपर बेसिकली उसको होता है वही प्री उस पे जाते हैं। हेमाटोमा ने वैसे प्री पेरिटोनियल स्पेस बनाई होती है ना, जब बना होता है ना, जब आप जाते हैं तो उसमें हेमाटोमा जो बना होता है पेल्विक फ्रैक्चर की वजह से, तो आप ऑलरेडी बनी होती है। आपने अच्छा तीन तीन लेप्रोटमी पैड्स एक तरफ डालने हैं, तीन दूसरी तरफ डालने हैं, ठीक है, अच्छा, पैकिंग के लिए। आप पहले हॉरिजेंटल खोलते हैं या वर्टिकल खोलते हैं इसमें बंदा? नहीं नहीं, मिड लाइन जो है ना, मिड लाइन सी है ना। लोअर मिड लाइन। हाँ, मिड लाइन इन सीएन है। और हम्म। उसके बाद जो ही आप नीचे अम्बलाइकस से नीचे जो है, वो आपकी स्पेस वैसे ही बनी होगी प्री पेरिटोनियल स्पेस, ठीक है। अगर ठीक आपने है। लेप्रोटमी भी करनी है तो आपने इधर पैक करके आपने बाकी ऑर्गन्स भी देखने हो तो वो भी देख सकते हैं, लेकिन पैकिंग इसकी प्री पेरिटोनियल हो। तीन एक ठीक तरफ है। पैड आएंगे, लेप्रोटमी पैड जो लेटरल पेल्विक वॉल के ऊपर, तीन इस तरफ। ठीक है। और फिर ये आपने कर लिया तो फिर ये इससे क्या होगा, जो वीनस है ना ब्लीड, वो आपका वो कंट्रोल होगा। जो बाइंडर आपने वो एक्स फिक्स जो लगाया उसके साथ बोन से जो ब्लीड हो रहा है वो रुकेगा। तीसरा ब्लीड आया था आर्टीरियल ब्लीड, वो इनसे नहीं रुकेगा। उसके लिए फिर एंजियो एम्बलाइजेशन की आप ये सारी रिससिटेशन हाइब्रिड ओटी हो, जिसके अंदर हम्म। आपके पास एंजियो एम्बलाइजेशन की भी होता है स्वीट, और वहीं पे ना हम्म। आप एंजियो हम्म। एम्बलाइजेशन करते हैं। सक्सेसफुल हुआ है नहीं हुआ तो आप उसके ऊपर जो भी दोनों चीजें वहीं पे, आर्टीरियल ब्लीड होगा तो फिर एंजियो एम्बलाइजेशन से कंट्रोल कर। बाकी दो कंट्रोल करने पैकिंग है और एक्सफिक्स है। सर, ये जो ओटी होते हैं जिनमें इस तरह के काम होते हैं, इसमें सारी एंजियोग्राफिक फैसिलिटी हाँ, और हाइब्रिड ओटी इंटरवेंशनल कहते हैं रेडियोलॉजिस्ट उसको हाइब्रिड और ओटी कहते हैं ना। हाइब्रिड ओटी, मतलब ये हाँ, मैंने कभी देखा तो नहीं है इस तरह का काम होते हुए, किताबों में पढ़ा ही है यहाँ सिर्फ। नहीं नहीं, यहाँ पे इनके सेंटर्स में है। यहाँ पे इनके होंगे जो बड़े सेंटर, वहां पे होंगे। हम्म। क्योंकि हाँ, थ्योरेटिकली तो ये चीजें पढ़ी हैं लेकिन कभी देखी नहीं ये चीज। वो मैं भी कह रहा हूँ यहाँ पे इनके पास है। तो ये आप आपने कह दिया उनकी तरफ डाल दिया कि आप वो हम्म। उसको करेंगे, जब उन्होंने क्या ठीक है जी स्टेबल होगा, फिर उसके बाद वापस उसके जीसीएस वाला सेकेंडरी सर्वे करना, उसके अंदर फिर अच्छा, आप मुझे एक और बात समझ नहीं आती कि बेसिकली जो ब्लीड होती है पेल्विस की, वो तो प्री सैक्रल वेन्स जो होती हैं वो ब्लीड करती हैं ना, पीछे वाली जो एला के देखें साथ जो प्री। देखें इसकी जो ब्लीडिंग है, थ्री टाइप्स की ब्लीडिंग है। एक है वीनस, नंबर वन। हम्म। नंबर हम्म। टू है बोन सर्फेस से ब्लीड होता है। नंबर ठीक थ्री है। आर्टीरियल ब्लीड होता है। तीन ब्लीडिंग है ठीक। टाइप्स की, इसीलिए एक्स फिक्स क्या करेगा, उसकी बोन को इमोबिलाइज कर दे तो बोन की जो ब्लीडिंग वो रुक जाएगी। पैक ठीक है। आपने किया तो उससे क्या होगा, वीनस ब्लीड रुकेगी। अब हम्म। आर्टीरियल ब्लीड इन चीजों से नहीं रुकेगी। उसके लिए करने हम्म। की क्या करना पड़े, एंजियोएम्बलाइजेशन के जो इंटरनल जो आइलियक है ना, आर्टरी की ब्रांच से जो ब्लीड आ रहा हो, हाँ। तो उसके लिए हम्म। फिर एंजियोएम्बलाइजेशन। थ्री टाइप्स की और ब्लीडिंग। अगर वो पूछे कि ना नहीं है एंजियोमोलाइजेशन की फैसिलिटी, फिर? देखिए पहले तो वही है ना, आपकी पैकिंग और वो चीजें कर ली आपने ना, हम्म। ठीक है। ठीक है। तो बाकी इसमें जो ऑर्थोपेडिक सर्जन जो आपने इन्वॉल्व कर दिया उसको और पैक कर दिया है, और एक्स फिक्स नहीं लगा सकते फॉर एग्जाम्पल, ऑर्थोपेडिक सर्जन भी नहीं है सपोज, तो हमने क्या हम्म। इसमें हमने क्या कर दिया उसको। हाँ, इसमें इंटरनल आइलिक फाइंड लाइगेशन का भी रोल है। इसमें किसका सर? इंटरनल आइलिक लाइगेशन का रोल है इसमें। इंटरनल आइलियक लाइगेशन का मैंने पढ़ा तो नहीं है। अगर चलो ये आमिर पढ़ेंगे, चेक। इंटरनल को कितने इंटरनल आइलियक वहां पे हिमाटोमा इतना होना किधर पता चलना है कि इंटरनल आइलियक आपकी कहाँ। पीछे असल में सर ये है कि इसमें वही इंजरी जिस वेसल की होगी उसी हिसाब से वो होगा। हम्म। इंटरनल आइलियक तो जो है वो भी इंजर हो सकती है हाँ, अगर जो है वो थोड़ा मिडिली फ्रैक्चर और हो तो। दूसरा ये देखना होता है इसके अंदर आपने डिस्टर्ब पल्सेस जरूर एग्जामिन करनी, पैल्पेट करनी। अगर किस तरह कोई एब्सेंट है तो देन एक्सप्लोरेशन, इंडिकेशन ऑफ एक्सप्लोरेशन सिर्फ एक ही है पेल्विक फ्रैक्चर के अंदर। अगर पल्सेस एब्सेंट हो जाए तो फिर इंडिकेशन है उसको एक्सप्लोर करने की, या पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा है, वरना पेल्विक हिमाटोमा को एक्सप्लोर नहीं करते। चलो अब आमिर पूछे ना जरा। ठीक है, चलें आमिर, अब आप ना तीन सिनेरियो हैं, वन बाय वन करके ना, वही आपके टोटल छह हुए ना जो हमने आपका पूछे हुए ना, छह जी सर, मेरे ख्याल 6 हो गए हैं। और अभी हमने कौन से कर लिए हैं? जो रह गए हैं ना। प्रैक्टिकल सर कर लिया एक था। मिनट है, हाँ। सो हु इज गोइंग टू बी कैंडिडेट है मंजू पहले जी? ठीक है जी, ठीक है। ओके।
जी आमिर. Okay, 67-year-old male presents to you in the ER with right-sided upper abdominal pain, and he also has mild jaundice. He is febrile. His temperature is 38.5, and his pulse is 111, and his BP is 100 by 60 millimeter of mercury. What will be your diagnosis? So the patient, the most Uh, cholangitis. he is the 78-year-old male. I will take the history and clinical examination. I will ask about previous episodes of abdomen. What is the site of upper abdominal pain? It is epigastric, right or left? Where is the most painful point of the in the abdomen? It's right upper abdominal pain. Doctor, what's your diagnosis? Okay, my different diagnosis is I want one diagnosis. okay. My diagnosis is cholangitis or cholangitis or acute cholecystitis. Okay. What are the points in favor of acute cholecystitis? Patient has a fever. He has a pain in right hypochondrium. He has jaundice, painful jaundice. He is having signs of inflammation. His blood pressure is low. It shows that he is in some form of septic shock, and there is How tenderness common in. you find jaundice and cholecystitis? If there is any slippage of the stone because into the CBD, patient normally have cholangitis secondary to slipped gallstone. So if the stones are small, they intermittently pass into the CBD and cause cholangitis and along with cholecystitis. So that would be obstructive jaundice or cholecystitis. It depends upon liver function test. If there is a obstruction on common bile duct and there is a raised ALP, then it can be an obstructive jaundice. And if it is there is no raised ALP, then patient has a cholecystitis. Okay. Okay. What would you do in this case? I will investigate the thing. I will do ultrasound. I will ask the radiologist Okay, to. ultrasound is done and there is no inflammation of the gallbladder wall. It's I would. normal. Okay, then I will ask the radiologist to see the common bile duct whether it is dilated or not. And I would like to know the CBD is caliber. dilated 1 centimeter with filling defect. With filling defect, then I will, because there is some obstruction in the distal CBD, I would also see the blood complete picture. There is any evidence of leukocytosis and neutrophilia and signs of inflammation on blood complete picture. Then I will do MRCP to see what is the anatomy of hepatobiliary system. MRCP and followed by So there is ERCP. dilatation of intra and extrahepatic biliary channels, and there is a filling defect in the lower CBD. Okay, then well, I would request consult this case with the gastroenterologist and medical specialist. I would request them to because CBD is dilated, there is a defect in biliary drainage because of distal stone. I will ask the gastroenterologist to do ERCP and sphincterotomy along with stone removal and to give Okay, the biliary ERCP drainage. was done, but the stone could not be removed. If ERCP and stone cannot be retrieved, then I will ask the radiologist to do percutaneous biliary drainage to go percutaneously and provide biliary drainage, and I will prepare the operation. How would he Uh, do it percutaneous? Under ultrasound guided, he will go into the dilated biliary channel in the liver. First of all, he will pass a needle, and over that he will pass What's that guide wire, called? Chiba needle. No, no. What's that? What do you call that procedure? Percutaneous biliary drainage and stent placement along with. Then I will. Is there anything else that you can do? Uh, Interventional radiologist is not available.
Yes, we can do it surgically. We can do choledochotomy surgically, either laparoscopically or open, and we can. The patient was evaluated by anesthetist, and he said that the patient is unfit for any big procedure. Then He we can cannot tolerate that. then we can do minimum procedure, that is percutaneous cholecystostomy, and we can provide drainage to the bile, and minimum procedure we can do percutaneous cholecystostomy, or we can do cholecystogenostomy as well if patient cannot undergo. Okay, okay. Cholecystostomy is a fine option. Cholecystogenostomy would be a big surgery for this patient. Okay, thank you, Dr. Usman. फीडबैक हम आखिर में Okay, करते हैं Dr. Shafkat, या Yes, sir. Comments? are you there? बाद में कमेंट्स हम बाद में करेंगे Okay, okay. कंप्लीट कर लेते हैं Okay, okay. So Dr. how about the Shafkat, next there is one? a 34-year-old female. Hello, Yeah. Dr. Shafkat, can Yeah, you yeah. hear me? Yes, I can hear you. There is a 34-year-old female. She has presented to you in the OPD with a lump that is 4 by 3 centimeter in the anterior abdominal wall. How would you proceed in this case? So I will take the history from the patient. I will ask the few questions from the patient. So ask this question particularly the lump. What's the duration of the lump? What's the aggravating factor? Does it increase with the lifting the weight, the cuff? So Yeah, the lump is reducible, and it reduces once the patient lies down, and cuff impulse is positive. okay, so that means it's a hernia. What's your diagnosis? It's a hernia. So I would like to ask what is the site of that lump, and then I will ask for the risk factor for the development of the hernia, um, associated symptoms, whether the patient having any symptoms suggestive of the obstruction, is it causing pain to the patient, and then I will ask for the patient about the comorbids, whether the patient is taking any. The patient has no drugs. comorbids. She's No a comor- young female of childbearing age, 34 years of age. 34 years. So I would also ask for about the has a family status. So, is she in the is she pregnant or not, and has she completed her family or not? And after that, I will perform the physical examiner to see the size of the lump, and what is the defect, size of the defect, whether there any scar mark, and whether previous procedures has been done or not. And then There are 2 C-sections. The family is complete, and the size of the defect is 4 by 3 centimeter. 4 by 3 centimeter. And is it symptomatic? The patient is having pain? Yes, the patient is having pain. That's why Pain. she has presented to you for Okay. the So treatment. no, I will consult the patient, and because it's a paraumbilical hernia. It's around the umbilicus. Yes, What it's on it's around the umbilicus. Yes. around it. So it's umbilical paraumbilical hernia. So I will consult the patient, and I'll offer the surgery, provided the patient has because the patient is symptomatic. So you planned surgery, and laparoscopic mesh repair was planned. What are the principles of performing laparoscopic mesh repair? So the first is getting the assessment by the anesthetist, and then the consent from the patient, completing all this, completing the investigation for the pre-initial assessment, and in the operation theater. So WHO safe surgery checklist is followed. So then. Dr. Shafkat, please tell me the principles, please. Principles of laparoscopic hernia repair. Hernia repair, it's basically a reduction. The first is the reduction of the contents, so doing the adhesolysis and reducing the contents, and then is defining the size of the defect. So then it's putting in the mesh,
which is a dual mesh, and there should be overlap of the mesh beyond the defects. It's about 6 centimeter all around. So mesh should be 6 centimeter all around. all around, all around. So and the mesh, the hybrid mesh, the composite mesh, which is a Which mesh you would use? composite mesh. Which composite mesh? Composite mesh they are used. I'm not. I can explain this. Yeah, what do you understand by Composite mesh mean that one side is absorbable and the other one is non-absorbable. So because there is risk Which of side you will keep towards the bowel? Absorbable side will be facing to the peritoneal cavity. That will be in contact with the intra-abdominal peritoneal contents, bowel and the omentum. Okay, and which side you will keep PTFE? You would use PTFE composite mesh or some other composite mesh? So I am just explaining the steps. I don't have the experience of performing the laparoscopic repair. So generally these composite mesh, the absorbable you side. You want to overlap 6 centimeter on all sides. Yeah. Okay. Thank you very much, Dr. Shafkat. Thank you. इसके क्या प्रिंसिपल्स हैं यार आमिर? प्रिंसिपल्स ये बाद में हम कर लेंगे। ये बाद में कर लेते हैं। वैसे प्रिंसिपल्स यही है कि जो सर जैसे सर ने बताया, सैक रिडक्शन है, कोई कंटेंट्स की रिडक्शन है, डिफाइनिंग ऑफ द सैक है, सैक की अगर आप एक्सरसाइज कर सकते हैं एक्सरसाइज कर लें, और फिर अगर डिफेक्ट क्लोज कर सकते हैं तो इफ इट इज एमिनेबल टू क्लोजर तो आप पहले उसको सुचरिंग से क्लोज कर लें और फिर उसके बाद मैश लगा लें। और मैश में जो है वो इट शुड बी 3 सेंटीमीटर 2 to 3 सेंटीमीटर जो है या वो ओवरलैप होना चाहिए ऑल साइड पे। 6 सेंटीमीटर थोड़ा ज्यादा हो जाता है, तो 3 सेंटीमीटर है मेरे ख्याल हर साइड पे जो आपने कवर करना है। 6 ज्यादा है, 6 नहीं होता यार, 6 बहुत ज्यादा। तो बाकी ये है कि सर इसमें जो है वो एक तो जैसे सर ने बताया कि एब्जॉर्बेबल सरफेस रख सकते हैं, जो पीटीएफई वाली है मैश पराइटेक्स वगैरह, वो उसमें यह है कि पीटीएफई को बाउल की तरफ रखते हैं क्योंकि वो हाइड्रोफोबिक होता है और वो उसके साथ वो नहीं होता, स्टिक नहीं करता, नॉन स्टिक होता है। तो ये बेसिकली वो है कि जी आई पॉम जो है इंट्रापेरिटोनियल ऑनले मैश रिपेयर इसको बोलते हैं, जो अंदर से करते हैं। और फिर इसमें जो है ना जो ये है कि 2 लेयर्स ऑफ टैकर्स और वो सूचर्स यूज होते हैं उसको इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल के साथ फिक्स करने के लिए। हाँ, ये मिस किया हाँ, उसमें ये होता है कि 2 लेयर्स जब आप लगा देते हैं तो उससे फिर अंदर जो है एक तो वो फिक्स भी अच्छा हो जाता है, फिर बाउल वगैरह या कोई ऐसी चीज उसके अंदर नहीं जाती। दूसरे टैकल के अलावा वो दूसरे भी प्रोलीन उसके साथ फिक्स भी कर सकते हैं, ट्रांसफेशियल जो सूचर्स होते हैं, सूचर्स और टैकर्स। हाँ, टैकर्स और 2 लेयर्स में करते हैं, इनर और फिर आउटर जो है ना। लेकिन आईपॉम की भी अपनी आईपॉम की भी जो ना कॉम्प्लिकेशंस है, उसके बाद डीएंस है ना, बाउल ऑब्स्ट्रक्शन बाद में होने के जो चांसेस है ना। जी सर हैं वो, लेकिन अभी ये जो नया लिटरेचर आ रहा है इसमें अच्छा, ये मैंने कर रहे हैं इसको। मैश का है प्री पेरिटोनियल मैंने नहीं जिक्र नहीं किया है, अदरवाइज प्री पेरिटोनियल यू कैन प्लेस द प्रोलीन मैश, जो प्री पेरिटोनियल जो है ना लैप्रोस्कोपी के लिए ई टैप कर सकते हैं, एक्सटेंडेड टैप जो है, एक्सटेंडेड टैप जो है ना टोटली एक्स्ट्रा पेरिटोनियल। हाँ जी, क्लोज द टैप वगैरह हो रहा है, क्लोज किया, उसके बाद आपने मैश अपने रख पेरिटोनियम को वो जो है वो उसके फ्लैप्स रेज किए, उसके अंदर मैश रख के तो फिर उसको क्लोज करते हैं। बिल्कुल। अच्छा, जो जरा बेहतर प्रोसीजर है, लेकिन वही है कि वो हाई स्किल जो है उसके लिए चाहिए। ओवरलैप जो है ना इसका जो है ना ऑल राउंड 4 to 6 सेंटीमीटर है। मैं दोबारा भी इसको कंफर्म कर लूंगा, ये मैंने पढ़ा हुआ है इसके है। सर देख लीजिए सर, ये 4 to 6 ज्यादा है, तो खैर बाकी जो है ना सर ये इसमें है आफ्टर 1 ईयर ना, आफ्टर 1 ईयर ये मैश जो है ना 50% इसकी श्रिंकेज हो जाती है, 50%। सर बिल्कुल, ये भी आपकी ठीक बात है, ठीक है, तो वो श्रिंकेज है। रिकरंस होने के चांसेस जो है ना, तो वो जो आपके इसमें
6 सेंटीमीटर का है, लेकिन अगेन मैं इसको जो है ना दोबारा फिर कंफर्म कर लूंगा। मैंने ये पहले मैंने देखी, वीडियो देखी और बाकी पढ़ा। सर ये मैशेज की ना टाइप्स देख लीजिएगा, ये इसमें मेरे ख्याल लिखी हुई है, किसमें लिखी हुई है ये, कुछ तो इसमें भी वाशिंगटन में। लिखी हुई है सर। वॉशिंगटन में लिखी है, बहुत सारा टेबल बना हुआ है एक बहुत बड़ा। हाँ, ठीक है। वाशिंगटन में लिखी हुई है और एक मैं वो और शेयर कर किताब दें थी इसकी उसमें भी थी, तस्वीर पेज। तो ये देख लीजिएगा सर। अच्छा, ठीक होगा। तो बाकी सर फिर अभी रह गया सर नुमान वाला सिनेरियो, हम्म। वो उनसे पूछ लेते हैं। चलो। Okay, Dr. Naman, 54-year-old male presents to you with right-sided groin swelling. Uh, he is having pain in the swelling for the last few hours. How would you approach this patient? From him that since when he's having the swelling and since when he's having the pain in the swelling, and was the swelling previously reducible when he was lying down or when he was relaxing, and any associated symptoms like coughing, like any urinary problems or any bowel problems or any previous surgeries or any comorbids. So then after this, I will examine the patient. Patient has cough. Uh, he doesn't have constipation. He is non-smoker, but he has chronic cough. So that's a risk factor for he likely has inguinal hernia, and this is a risk factor for this development of hernia. So I will now examine this patient. What would be your differentials in this case? There could be an inguinal lymphadenopathy, or he will, may be having a femoral hernia. Okay. So there is a triangle called Hazelback triangle. Do you know its boundaries? Yes, the Hazelback's triangle is the triangle from where the direct hernia comes. Uh, its medial side is formed by the lateral border of rectus abdominis. The sorry. The lateral border is formed by the inferior epigastric vessels, and the base is formed by, I think, the inguinal ligament. Am I right? There are two other ones you planned to do rotary transabdominal preperitoneal repair in this case. It was a right-sided inguinal hernia. So there are two triangles. Can you tell them what are they and what are their boundaries? In laparoscopy, there is a triangle of pain, and there is a triangle of doom. These are the two triangles. So kindly speak a bit louder and tell me the boundaries. Okay, so I will study the boundaries. I don't remember them yet. Okay, no problem. So what's the importance of these triangles? So in the triangle of pain, I think there are branches of nerves like the genitofemoral nerve and the branch of femoral nerve, and there was one other, I think. So you can cause injury to these nerves, which can cause chronic pain and persistent pain afterwards to the patient. And the triangle of doom is where there are vessels like I think internal iliac vessels, which can be injured during dissection. Yes. So what open repair options are available for this patient? The ideal option should be a Lichtenstein's mesh repair, a tension-free repair with mesh applied over the posterior wall of the inguinal canal. What are the complications of this procedure? The early complications are seroma or hematoma formation, and the hematoma can be in the inguinal wound or in the scrotum as well. And the patient can have urinary retention in the early post-op period, and later on he may have recurrence of this hernia, and he may have chronic pain in the scar. And apart from that, wound infection is another complication which occurs on 7th to 10th day.
What's the rate of recurrence for this procedure? In expert hands, good hands, the recurrence should not be more than, should be less than 5%. Okay, Dr. Nuwan, thank you very much. अच्छा, बाकी सर ठीक था। इसमें वो एक तो बाउंड्रीज पढ़ लें सर, ट्रायंगल्स जो है हर्निया की बहुत जरूरी हैं, ये आपको आनी चाहिए। डोम्स ट्रायंगल है ना, डोम्स ट्रायंगल है बहुत। चल मुझे इधर एक्सप्लेन करने पे तेरे से दोबारा आपसे पूछते हैं ना, जो बताना ये ठीक है कि नहीं। डोम्स ट्रायंगल वास्ट डिफरेंस और जो स्पर्मेटिक वेसल्स हैं इनके दरमियान में आप आइलिक वेसल्स होती हैं, एक्सटर्नल आइलिक जो ना रन करते हैं, वेन भी और आर्टरी भी, दोनों इसके अंदर। नहीं इंटरनल नहीं सर, मीडियली वेस्ट डिफरेंस है। हाँ, और लेटरली जो लेटरली ना टेस्टिकुलर वेसल है और इंफीरियरली पेरिटोनियल फोल्ड है। अच्छा ठीक है। अच्छा, बेस इसकी क्या बनती है? बेस जो है पेरिटोनियल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम, फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम, राइट। और इसके अंदर जो है ना आपकी ये होती है जो है ना एक्सटर्नल आइलिक वेसल, एक्सटर्नल आइलिक वेन भी है और आर्टरी भी है। इससे लेटरल जो वेसल्स है ना स्पर्मेटिक वेसल्स, उससे लेटरल जो ना ट्रायंगल ऑफ पेन है जिसमें अंदर लेटरल कुटेनियस नर्व ऑफ थाई होती है, जेंटोफेमोरल उसकी वो भी नर्व होती है। तो उसके अंदर इंग्वाइनल लिगामेंट के नीचे जो ना उसको ये विस्कॉस मसल्स के ऊपर ही होता है, उसको अपने फैट को डिसेक्ट नहीं करना होता, उससे नीचे जाए तो नर्व जो एक्सपोज होती है। ट्रायंगल की सर बाउंड्रीज बताएं सर शफकत। हाँ, जो अब मुझे क्लियर अगेन नहीं है, लेकिन ये है कि स्पर्मेटिक वेसल से लेटरली, उससे लेटरल जो है ना ये ट्रायंगल ऑफ पेन होती है, जिसमें लेटरल नर्व ऑफ लेटरल कुटेनियस नर्व ऑफ उसी से लेटरल चल पड़े ना, ये उसकी जो लेटरल बाउंड्री है, ये टेस्टिकुलर वेसल्स या ये जो स्पर्मेटिक वेसल्स हैं। हाँ बिल्कुल, स्पर्मेटिक वेसल्स जो है मीडियल बाउंड्री बन जाएगी और लेटरल बाउंड्री बन जाएगी इलियोप्यूबिक ट्रैक। इलियोप्यूबिक ट्रैक, ठीक है। और नीचे वही पेरिटोनियम की फोल्ड होगी, पेरिटोनियम की फोल्ड, ठीक है। तो इसके अंदर भी जहां डिसेक्शन तक आप नीचे डिसेक्शन करते हैं ना, इसको सर मैं आपको रिवाइज कराता हूं, basically- मैं आपको रिवाइज करा देता हूं। मतलब ट्रायंगल ऑफ पेन लेटरल है उससे। हाँ सर, यार बेसिकली ना इसको इस तरह करना ना, जो एक मिनट, इसका सिंपल तरीका है, अगर इफ आई कैन मेक यू को होस्ट, इसके अंदर अगर वो आप उसके अंदर है तो आप उसको स्क्रीन शेयर कर दें। सर ये तस्वीर बनी हुई, मैं इसको आपको ना पहले इलेबोरेट कर देता हूँ ना। बेसिकली सबसे जो मीडियल होता है ना वो वेस्ट डेफरेंस पड़ा होता। हाँ ठीक है, उसके बाद जो है ना इसकी वास्ट डेफरेंस और दो लेटरल गोनेडल वेसल्स जो है ना, गोनेडल वेसल्स। पिक्चर तुम्हारे में बुक है, किस में से देख रहे हो अभी? सर ये ना बेले में भी दिया हुआ है और उसमें भी दिया हुआ है, हाँ शॉर्ट्स तो में ये मैं सिंपल देता हूँ आपको उसके उसका। उसका ये है कि उसके अंदर ना उसको ग्रुप को, पर नहीं तो उस पर शेयर कर देना। मैं तस्वीर खींचता हूँ, ठहरे। हाँ हाँ, पिक्चर जो ना, पिक्चर उस पर शेयर कर देना वो। अच्छा, तो और इसका जो है ना, एक तो ट्रायंगल्स की अपने बात कर ली, और इस अच्छा बाकी सर, दूसरा रिकरेंस रेट जो है ना वो 1 to 2% है 1 to इसका, 2% है, बिल्कुल। मैश 5% नहीं है। और बाकी ट्रायंगल वाला जो है, ये ट्रायंगल की बाउंड्रीज याद होनी चाहिए। ये मुझसे भी पूछी है, पहले भी किसी ने कहा था कि उनसे भी ये पूछी सर है। इसमें नहीं, वो मैं हैडलबैक आपको वो खींच के भेजता हूँ अच्छा तस्वीर इसकी ना, कि अच्छा, निकाल दूसरी के। ऑप्शन है अल्टरनेटिव, आपने कहा था ना कि ओपन में आपके पास लाइसेंस्टीन रिपेयर है, जो मैश रिपेयर जो होगी, फिर टिश्यू रिपेयर्स हैं, डिसार्डा हो गई, कि आपने ऑप्शन शोल्डाइस, शोल्डाइस शोल्डाइस सबसे अच्छी है। डार्निंग है, शोल्डाइस है, अच्छा वो ऐसा रिजल्ट जो है। पहले होती थी, अगर ऑप्शन ही पूछे वो क्या क्या ऑप्शन है, बसीनी भी है, मॉडिफाइड बेसिनी है, शोल्डाइस है और ये डिसार्डा। हाँ आप तो ये बता सकते हैं क्या करते हैं? डिसार्डा में सर इंग्वाइनल लिगामेंट की कोई 1 to 2 सेंटीमीटर की स्ट्रिप ले लेते हैं। इंग्वाइन लिगामेंट की जब नहीं, एक्सटर्नल जो ओब्लिक्स। है उसको दरमियान से वो कर लेते हैं डिसोसिएट, अलग कर लेते हैं, और वो इट रिमेन्स अटैच्ड अपर और लोअर बॉर्डर पे लगी रहती है। और फिर उसको जो है नीचे इंग्वाइनल लिगामेंट के साथ, जैसे बेसिनी में वो करते हैं ना सर अटैच, उस तरह से उसको उसके साथ सी देते हैं। अच्छा, और जो फिर वो उसको ना सर, जो अपर वाला है उसको, अपर फ्लैप यानी जो इसका जो पोर्शन है जो बच जाता है, वो 1 to 2 सेंटीमीटर से जो ऊपर वाला उसका पोर्शन है, उसको फिर जो है
बंद करते हैं लोअर फ्लैप के साथ। अच्छा ठीक, चलो देखते हैं उसका। यानी ये 1 to 2 सेंटीमीटर की स्ट्रिप उसमें से उसके साथ अटैच भी होती है, लेकिन वो नीचे इंग्वाइनल लिगामेंट और फ्लोर के साथ पीछे वो हो जाती है, क्या कह लें कि उसका पार्ट बन जाती है। कंजाइन टेंडन और इंग्वाइनल लिगामेंट के दरमियान वो एक आप कह लें कि 1 to 2 सेंटीमीटर की स्ट्रिप जो है वो ऐसे इंग्वाइनल लिगामेंट और ऊपर कंजाइन टेंडन के साथ उसको आप स्टिच कर देते हैं, और बाकी जो पोर्शन होता है उसको फिर दोबारा से बंद कर देते हैं। ये डेसार्डा है, बेसिनी है, मॉडिफाइड बेसिनी। मॉडिफाइड बेसिनी में मॉडिफाइड भी बेसिनी स्टूपा में है। करते हैं, मॉडिफाइड बेसिनी में स्टूपा क्या करते हैं, टेनस स्लाइड करते हैं ना, जो जी रेक्टस सर, के उसमें कंजाइन टेंडन के उसमें ऊपर। सर टेनर स्लाइड तब करेंगे अगर उसमें टेंशन होगी तो। वैसे हाँ मॉडिफाइड बेसिनी जो है उसमें कंजाइन टेंडन इज अप्रोक्सीमेटेड विद इंग्वाइनल लिगामेंट। हाँ बिल्कुल, और अगर टेनिस स्लाइड कर तो दें उसको सादा मॉडिफाइड बात कह है। देंगे ना, क्योंकि टेंशन आएगी तो अगर थोड़ा उसमें सा। जो है वो अगर उसमें टेंशन है तो फिर उसके ऊपर वो लगाएंगे, टेनर स्लाइड लगाएंगे। हाँ, ये सिर्फ वो है जिस तरह अगर ऑप्शन पूछे जी बताएं क्या क्या ऑप्शन है, तो वो करने का, उसको गिनवाने के लिए असल कि में सर ये मेरे ख्याल जो बेसिनी था उसमें ये था कि जो वो है मीडियली कंजाइन टेंडन को और लेटरली जो है ना वो पीछे फेशिया ट्रांसवर्सैलिस को इंग्वाइनल लिगामेंट के साथ वो जोड़ते थे। फिर ये मॉडिफाइड बेसिनी आया, इसमें कंजाइन टेंडन को ही लेटरल से लेके मीडियल तक वो जोड़ते हैं। हम्म, ये हो गया। तो ये हर्निया तो सर वो है कि इसको आपको ना बहुत अच्छा आना चाहिए, सारी चीजें ना इसकी, हम्म, इस पे माफी नहीं होगी। तो हम्म, ये सर देख लीजिएगा। बाकी और कौन सा था उस्मान वाला सिनेरियो? उस्मान अच्छा भला मैं बता रहा हूँ कि पेन अपर क्वाड्रेंट है, जॉन्डस है, फीवर है, हाइपोटेंशन है, टैकीकार्डिया है, तो हाँ ये कोलिसिस्टाइटिस भी कोलेंजाइटिस है। करता है। उसको आप अच्छा नहीं, एक्यूट इसका कोलेसिस्टाइटिस क्यों लेके जा रहे हैं, इसने, बता रहे हैं? अच्छा ये सिनेरियो जो है ना, मैं बेसिकली रिस्पॉन्ड कर रहा था ना पहले, तो हाँ, रिस्पॉन्ड मैंने कोलिंजाइटिस बोला है उसका ना, स्टार्ट मैंने किया था, लेकिन उस्मान ने अपना उसने शुरू कर दिया ना, तो आई थॉट रेनार्ड्स पेंटार्ड सीधी सीधी आपको मैं बता रहा हूँ, और आप उसको कोलिसिस्टाइटिस लेके जा रहे हैं। तो वो कोलिसिस्टाइटिस में तो ओकेजनली जॉन्डस होगा, लिवर एंजाइम्स रेज होंगे। अब जब आप फिर उसका स्टोन नीचे लेके जा रहे हैं कोलिसिस्टाइटिस की, तो वो कॉज नहीं है, वो तो फिर कोलेंजाइटिस या ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डस का है ना, कि जी अगर स्टोन नीचे चला गया सिस्टिक डक्ट से तो वो तो कोले ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डस बन गया ना। ठीक है। ऑब्स्ट्रक्टिव अब जॉन्डस इसके विद अंदर कोलेंजाइटिस है तो उसको इस आप बेसिकली कोलेंजाइटिस ही ट्रीट करें। अब इसके अंदर ना और फिर कोलिंजाइटिस जिस तरह डायग्नोसिस बोला ना कि जी मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस है कोलिंजाइटिस, तो अब हिस्ट्री उसमें पूछनी है कि जी इसकी कॉजेज क्या हैं, उसके रिलेटेड है कॉजेज की, सीबीडी स्टोन्स भी हो सकते हैं, इस पे वर्म्स हो सकते हैं, प्रीवियस उसकी कोई स्टेंट ईआरसीपी स्टेंट डला हुआ है, प्रीवियस कोई एनास्टोमोसिस उसका हुआ है, कोलिडोकोजिनोस्मी टाइप जो है ना, तो उसकी वजह से इसका कोलिंजाइटिस, मतलब ये हिस्ट्री के अंदर ये पॉइंट्स हमने पूछने हैं। तो उसके ये पूछने हैं जो उसके रिस्क स्ट्रेटिफिकेशन करनी है, ये ग्रेड 1 है, ग्रेड 2 या ग्रेड 3 है, ऑर्गन डिसफंक्शंस हैं कि नहीं है, और डिफरेंट उसके आ जाते हैं वो उसमें ना, जिस तरह वो तो सर कोलिसिस्टाइटिस पे आप चलेंगे ना, वो इसका तो भी है, टोक्यो नहीं नहीं नहीं, क्लासिफिकेशन पे चलेंगे। कोलिंजाइटिस में भी है, कोलिंजाइटिस की मैनेजमेंट ही आगे उसके ग्रेड वाइज है ना, उसकी भी ग्रेड्स हैं कोलिंजाइटिस के। अच्छा, तो ग्रेड 1 के जो है ना वो है एंटीबायोटिक जो देते हैं, एंटीबायोटिक से सेटल डाउन हो जाता है, ग्रेड 2 का जो ना आपको फिर ऑनवर्ड जो है ना वो आपको ड्रेनेज करनी पड़ती है, जिसमें आप ईआरसीपी या अगर पेशेंट नहीं है, फिट नहीं है, फिर पीटीबीडी वो भी नहीं है, तो आपके दूसरे एंडोस्कोपिक वो है जो चीजें हैं मिनिमल जो इनमें से, अगर पीटीसी भी फॉर एग्जांपल वो भी कोएगुलोपैथी है कंट्रा इंडिकेटेड या सक्सेसफुली नहीं हुआ, ठीक है, यूएस वाला भी एक ऑप्शन है कि यूएस गाइडेड भी होती है कोएगुलोपैथी में, तो यूएस गाइडेड आप उधर से जाते हैं स्टमक में, और उधर से ही एक गाइड वेयर डाल के और उसके बाद स्टेंट डाल देते हैं, तो ये भी एक ऑप्शन है। जो कोलिडोकॉटमी वाली लास्ट रिजॉर्ट है, तो कोलिडोकॉटमी में नहीं थे अगेन, वो आया था ट्यूब फिर कोलिसिस्टोमी वाली आई। ये इसकी जो ना ग्रेड, इसकी कोलेंजाइटिस के ना ग्रेड्स हैं इसकी, इसकी भी ग्रेडिंग है, ये मैनेजमेंट भी सर उस शेयर हिसाब से। कीजिएगा हाँ, कोलेंजाइटिस के ग्रेड जो है ना। ये उसमें ना सेजेस का मैंने आर्टिकल उसमें से पढ़ा था ना, उसमें उसमें हाँ बिल्कुल। बेसिकली सर ये है कि जी कोलेंजाइटिस है, इसमें आपने ड्रेनेज देना है, रिससिटेट करना है पेशेंट को। रिससिटेशन की बात नहीं हुई, हम्म, रिससिटेशन की बात करनी चाहिए कि जी ये हम्म, पेशेंट जो है रिक्वायर्स रिससिटेशन। हम्म, और फिर साथ साथ जो है वो इन्वेस्टिगेशन, अल्ट्रासाउंड,
फिर वो अल्ट्रासाउंड के बाद MRCP या ERCP कोएगुलेशन लाजमी कराना जो है इसमें। वो इसमें चूंकि अल्ट्रासाउंड पे क्लियर हो गया, फिलिंग डिफेक्ट बता दिया, तो आप डायरेक्ट ERCP पे चले जाए। और ERCP के बाद अगर वो फेल हो गया है तो फिर PTC है, परक्यूटेनियस ट्रांसपेटिक कोलेंजियोग्राफी। उसको वो ना बोले कि जी रेडियोलॉजी गाइडेड ड्रेनेज और इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी ड्रेनेज, जो उसका लफ्ज है वो सही बोले कि ये टर्मिनोलॉजीज का फर्क है। हमारे यहाँ हम लोग जैसे कहते थे मल्टी डिसिप्लिनरी मीटिंग, ये कहते हैं ट्यूमर बोर्ड कहते हैं, या ये और कोई इनकी वो होती है, क्या नाम है, टर्मिनोलॉजीज का फर्क है। तो इसलिए इसको ना मतलब वो जो ट्रू टर्मिनोलॉजीज हैं वही यूज करें। फिर इसमें वही है कि कोलिसिस्टोस्टमी है अगर सिस्टिक डक्ट पेटेंट है, अगर सिस्टिक डक्ट पेटेंट नहीं है तो फिर कोलिसिस्टोस्टमी अनसक्सेसफुल होगी, क्योंकि वो ड्रेनेज गॉल ब्लैडर को तो ड्रेन करेगी लेकिन वो CBD को ड्रेन नहीं करेगी। इसलिए जो है सिस्टिक डक्ट अगर पेटेंट है तो फिर कोलिसिस्टोस्टमी और परक्यूटेनियस ट्रांसपेक्टिक एंजियोग्राफी रिलेटेड ड्रेनेज। और इवन जैसे सर शफकत से एक दफ़ा हमारी डिस्कशन हुई थी कि जी इसमें आप वो भी कर सकते हैं कि PTC गाइडेड कोलिडोकोस्कोपी और अटेम्प्ट एट रिट्रीवल ऑफ जो है वो स्टोन भी कर सकते हैं। और फिर इसके वो तो अंदर लेकिन अभी उसका वो करते हैं जैसे ना। इसमें जो लिथोट्रिप्सी वगैरह भी वो हो हाँ, जाती है कि स्पाई जी क्लास जो है ना लिथोट्रिप्सी उसमें। करके तो उसके साथ भी स्टोन रिमूवल करें। हाँ, वो तो तो मैं ये कहता है हूँ कि 2-1 बस हफ्ते बाद करते हैं ना। वो जब एक्यूट इन्फेक्शन सेटल कर जाती है और ट्रैक मैच्योर हो जाए उसके बाद करते हैं वो ना। ये चीज ये जो स्टोन रिट्रीवल करते हैं ये नहीं उस वक्त होता नहीं है ना जब। नहीं हाँ, नहीं, आप वो दूसरे उसमें ले गए हैं। वो तो है कि जी आपने टी ट्यूब डाली, वो ट्रैक टी वाली ट्यूब बात कर वाला, रहे हैं। नहीं, वो उसकी वो टी ट्यूब ये वाले वाला ट्रैक है। की बात हाँ, कर वो T2 वाला ये है कि आपने PTC की, परक्यूटेनियस हम्म, ट्रांसहेपेटिक एंजियोग्राफी, ठीक है, और डक्ट डायलेटेड है, तो उधर ही गाइड वायर डाल के उसमें डायलेटर डालते हैं, उसको डायलेट कर लेते हैं, फिर उसी के अंदर ही कोलिडोस्कोप डालते हैं परक्यूटेनियस, और उधर से आप उस पर डक में जाके स्टोन को डामी बास्केट डाल के बाकी उसके रिट्रीव करते हैं। इवन जो लिथोट्रिप्सी है, शॉक वेव लिथोट्रिप्सी, लेजर और दोनों ये भी की जा सकती है। शॉक वेव लिथोट्रिप्सी, स्पाई ग्लास उसको कहते हैं, उसके जरिए उसको तोड़ते हैं स्टोन को ना। लेकिन इनिशियल फेज में तो ठीक हो स्टेंट गया सर। डाले। बाकी माशाल्लाह जबरदस्त आप लोग सिस्टमेटिकली जवाब दे रहे हैं। बस इसको थोड़ा सा देखें कि जो 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 चीज बन रही है मोस्ट प्रोबेबल उसको पहले बोलें, दूसरी को बाद में बोलें। हम्म, ये जो है ना कोलेंजाइटिस और एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस, इसको प्रायोरिटाइज कर लें। एक दफा वो थोड़ा सा इस तरह की बात करते हैं कि जी गिव मी वन डायग्नोसिस, तो फिर हाँ, आपने वो वन नहीं बताना है। वही मैं जो इसको कल आपने कह वो रहा था, जिससे रेड कल जो की है ना। होती है उसको थोड़ा सा अगर वो, हाँ, अगर वो थोड़ा सा उसको चेंज कर देता है तो फिर उसको ना आपने उसी हिसाब से चलना है कि जी हिस्ट्री वो, नहीं लेने देता या हाँ, एग्जामिनेशन पूरी तरह नहीं करने देता, बीच में कहता है जी ये है, तो उसको उसी से आगे लेके चल पड़े। अब जैसे कल था ना अपर ये डिस्कम्फर्ट मतलब एक कितना वो है ना ब्रॉड के, अब ये किसकी बात करें, कोई पता नहीं चली क्या डायग्नोसिस है, तो उसमें ऑब्वियसली फिर हिस्ट्री से पूछेंगे, बाकी सारा करेंगे। लेकिन अगर उसने इतनी इन्फॉर्मेशन दे दी, क्लियर का हिस्ट्री भी एग्जामिनेशन की फाइंडिंग दे दी है, तो फिर हमें फिर डायग्नोसिस बताना चाहिए। चलिए सर फिर हम्म, चले। ठीक हो गया। हमारा मार्च तो चलें जी, आज हमारे हो गए हैं कितने 4 सिनेरियो हो गए, स्टार्टिंग विद ट्रामा ट्रॉमा। वाला एक हो गया, ट्रॉमा वाला 3 एक ये हो हो गया। गया। हाँ, ट्रॉमा वाला हमारा सिनेरियो हुआ था पहले, और उसके बाद एक हर्निया का हमने कर लिया, इंग्वाइनल हर्निया, पैराम्ब्लाइकल हर्निया की है, और कोलेंजाइटिस, तो 4 सिनेरियो आज के। ठीक है, तो इंशाल्लाह जी कल फिर इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, तो ठीक है, तो थैंक यू सो चलो मच। ठीक है, थैंक यू। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच सर।